Hello there, you're with NDTV. I'm Maha Siddiqui. While Arvind Kejriwal beats the Operation Lotus at play in Delhi drum, it appears that it's the Jharkhand government that could be in deep trouble. A disqualification sword hangs over Chief Minister Hemant Soren. The Election Commission has sent its opinion to the governor on a mining case related to Office of Profit issue. If the envelope holds a disqualification card for Soren, will the JMM-led alliance be able to tide over the trouble? That's our discussion this evening. और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि मिड टर्म पोल की तरफ जो है हेमंत सोरेन को जाना चाहिए, असेंबली डिसॉल्व होना चाहिए और 81 के 81 विधानसभा में चुनाव होना। अगर जरूरत पड़ी तो विधायकों की परेड की कराई जाएगी राजभवन में। जब जरूरत होगा तब, अब तो जरूरत अभी है। सबको मान सम्मान से जीने का अधिकार है। Jharkhand Chief Minister Hemant Soren today said that he hasn't yet received any communication, though he's seen several media reports and BJP statements about the Election Commission recommending his disqualification as an MLA. The BJP, which has accused Hemant Soren of giving himself a mining lease and thus sought his disqualification, is already moving to the next political step, seeking mid-term polls on moral grounds. However, the contents of the Election Commission's report are not public yet. क्या आप खुद माइंस मिनिस्टर हो, माइंस ले लेते हो, माइंस की अवधि बढ़ा देते हो, मुख्यमंत्री साइन कर देते हो, व्यापार में कर लेते हो। जब आप मंत्री या मुख्यमंत्री होते हैं तो ये नियम है संविधान का कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और अपने व्यवसाय में नहीं लग सकते हो। आपको व्यवसाय नहीं करना है, आपके लिए सभी बराबर है। फर्जीवाड़े हैं। चुनाव आयोग यदि संवैधानिक संस्था है तो उसका सीलबंद रिपोर्ट किसी सांसद के पास कैसे आ सकता है? ये बहुत आपत्तिजनक है और हम लोग इसका कंडेम करते हैं। जिस दिन से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के तिकड़म और हथकंडे अपनाकर वहां की सरकार को कमजोर करने में और विस्थापित करने का सतत प्रयत्न कर रही है। Let's start our discussion immediately. I'm going across now to Surya Prakash Mehta, leader of the BJP. Dr. Tanuj Khatri, spokesperson of the JMM, will join us shortly. Sanjay Jha, political analyst, will also be with us in a bit. Neeraj Mishra, spokesperson of the Congress party, is also with us. Coming first to you, Sanjay Jha, do you see all signs of trouble here? And could the Congress be the weak link over here? Maha, I think this is not as straightforward as that. I believe this is the BJP's grand old Sam Dam Dand Bhed politics all over again. I think the BJP has now become so insecure that they actually have no concern at all about the reputation of Indian democracy. I live in Maharashtra. I know what they did today in the Operation Lotus. We all know what is going on in Delhi with the Aam Aadmi Party, which has been openly talking about 20 to 25 crores being offered as freebies, the reverie that Mr. Prime Minister Modi talks about. And I think the same Malay story is going to play out in Jharkhand. Don't forget, Maha, a couple of weeks ago, you had legislators of the Jharkhand Congress who actually accused the Himanta Biswa Sharma of the Assam government led by the BJP, the chief minister, of trying to destabilize the government in Jharkhand. So what you're seeing is really a brazen manifestation of the most vulgar politics that India is seeing. And, one of the points that somebody raised is so relevant here, Maha, that how is it that a document which is meant to be confidential, total secrecy is supposed to be shrouding it, is known to a BJP leader. So let's get those answers from the BJP representative here. Sanjay Jha, I'll interrupt you there because Surya Prakash Mehta is here. Let's get those answers from him. Hemant Soren says that he has received no communication, Mr. Mehta, from the governor's office. Then how is it that the BJP leaders already know about the Election Commission's recommendation that they have asked for his disqualification? धन्यवाद मिस सिद्दीकी जी। और पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय वंदे मातरम। अभी हमारे संजय झा जी बहुत आदरणीय हैं, वरिष्ठ हैं। उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए, पहले मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और यही कारण है कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हुआ, फिर दिल्ली में हो रहा है और अब झारखंड में हो रहा है। तो संजय भाई,
महाराष्ट्र के अंदर तो हमारे संग धोखा हुआ था। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहां पर शिवसेना के अंदर जब डिस्प्यूट हुआ तो उसके बाद ही तो दोबारा सरकार बनी। तो वहां पे गठबंधन को किसने समर्थन दिया? महाराष्ट्र की जनता ने किसको चुना? दूसरी चीज रही बात दिल्ली की, तो जब से आबाकारी नीति दिल्ली के अंदर लागू हुई थी 2021 की, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट आदरणीय आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में गली गली चप्पा चप्पा इसका विरोध कर रही थी। और उसके विरोध के कारण ही जब एलजी साहब ने उसकी रिकमेंडेशन सीबीआई को कर दी तो जांच हो रही है। तो जांच से डर किस बात? लेकिन मैथिल जी, आम आदमी पार्टी तो ये आरोप लगा रही है कि आप यानी कि बीजेपी उनके एमएलएस को फोन करके पैसे का प्रलोभन दे रहा है और स्विच करने के लिए बोल रहा है बीजेपी के लिए। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट लेट मी गो अक्रॉस टू नीरज मिश्रा who's also with us here. Neeraj Mishra, are all the Congress MLAs accounted for? Because it's being alleged that Congress could turn out to be a weak link and the Hemant Soren government, if at all, could fall because of that. Is that looking like a possibility at the moment? What are you all doing to ensure that all your MLAs stick to the alliance? So, Maha, let us understand this issue at first. There is a set precedent that in Kartar Singh Badhana's case, that mining lease does not account for office of profit. Let us first establish this, that the issue which is there, it is totally fabricated and it does not hold any account to disqualify Mr. Hemant Soren as a legislative member. Second, a few weeks back, we all witnessed how they were trying to run the Operation Kichad, not the Operation Kamal, but they were trying to run the Operation Kichad, in which they were trying to force our MLAs through Himant Biswa Sharma to switch grounds. And all our MLAs held their fort. They are dedicated to the party ideology, to the leadership, and to the alliance. And in this case also, I'd like to bring one point more, that Election Commission is working under some prejudice. And this is with a very heavy heart which I'm saying. There is an election petition on a BJP MLA just few kilometers away from Ranchi. Okay. His constituency is Kankad. In Kankad, he has submitted a false certificate which states that he's a tribal. So you are questioning the impartiality of the Election Commission as well, leveling a grave allegation there as well. But let me bring in Tanuj Khatri. With a very heavy heart. All right. I'm saying this. All right. Let me bring in Tanuj Khatri as well. Let me bring the JMM representative here. Tanuj Khatri, what options does the JMM have if Hemant Soren is indeed disqualified? देखिए, ये सारी इफ और बट की बातें तभी होंगी जब कोई चीजें सामने होंगी। अभी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है, इनके सांसद जो है मिठाई बांटने की बात करते हैं, जश्न मनाने की बात करते हैं बिना किसी निर्णय के। जब जो जैसा निर्णय होगा तब वैसी बातें होंगी। लेकिन तनुज खत्री, ये बात बताइए कि अगर आप लोगों को लग रहा है बहुत वक्त से कि ऑपरेशन लोटस हो सकता है झारखंड में, तो अभी तक कुछ तो आपने ऑप्शन सोचे होंगे ना? देखिए, वो मैं वही बात कह रहा हूं आपको कि हमने लगातार इनके ऑपरेशन लोटस को झारखंड में विफल करने का काम किया। ये किस तरीके से इन्होंने ऑपरेशन लोटस चलाने का काम किया था और असफल हुए थे, उस पे दो बार ये असफल हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और निश्चित रूप से आगे भी असफल होंगे। मैथिल जी, इसका जवाब आप देंगे? 2 बार ये कह रहे हैं, 2 बार असफल रहे ऑपरेशन लोटस में। आई विल गिव द रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो कहा, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिया, एक ट्राइबल का नाम लिया, तो क्या कांग्रेस के पैरों में मेहंदी लगी है? वो इस विषय को ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्यों नहीं पिटीशन दायर करती है? दूसरी चीज, लिसन टू मी ना, मैंने आपके समय में नहीं बोला है। मिस्टर नीरज, काउंट डाउन, हैव सम पेशेंस फॉर इट, हैव सम पेशेंस हियर, प्लीज अलाउ मी टू speak. This is my fundamental right. I will requesting you, dear. नीरज मिश्रा
Neeraj Mishra, let Mr. Mehtul speak. Let him give a clarification to all the allegations that have been made. Go ahead. देखिए ये जो भी विषय आया है, ये विषय आया है एक मुख्यमंत्री जो कि राज्य के खनन मंत्री भी हैं, और उन खनन मंत्री जी ने अपने नाम पे पट्टा कराया, उसके बाद अपनी पत्नी के नाम पे पट्टा कराया, अपने जो मीडिया सलाहकार है उनके नाम पे पट्टा कराया, अपने विधायक प्रतिनिधि के नाम पे पट्टा कराया, साथ ही शेल कंपनीज के द्वारा अरबों खरबों रुपया रोटेट कराकर प्रदेश के अंदर अपने सगे संबंधियों को भागीदारी कराई उन पट्टों के अंदर। अब इसकी कंप्लेंट जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश यूनिट ने राज्यपाल जी से की और उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये मेरे मित्र को शायद जानकारी नहीं होगी, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तब भी चुनाव आयोग ने उनके विरुद्ध ऑर्डर पास किया था। नहीं वो तो सूर्य प्रकाश महतिल जी ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी को इस बारे में कैसे पता है कि उस एनवेलप के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस ही है। ये हम मानते हैं क्योंकि एक व्यक्ति जिसके नाम पे पट्टा होगा वो डिस्क्वालिफाई होगा ना। आप मुख्यमंत्री हैं, आप खनन मंत्री हैं और अपने नाम से पट्टा करवा रहे हैं, तो हम मानते हैं इस चीज को कि ये डिस्क्वालिफाई होंगे ही होंगे, ये रिकमेंडेशन जाएगा ही जाएगा। मैथिल जी, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भाजपा के राज्य में हमारे जितने संस्थाएं हैं जो प्रजातंत्र और संविधान के संस्थाएं, उसका तो आप लोगों ने गला घोट दिया है। वो तो केज्ड पैरेट था, वो तो केज्ड पैरेट मर चुका है। बट बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल Sanjay Jha, he is making a point that if it's a case of office of profit, then a disqualification is going to happen. They know through precedents that has been the case even earlier on. Please allow me to 20 seconds. Please allow me. Please allow me. It does not amount to office of profit. It has been settled in 1964, in 1991. Please allow me for 20 seconds. All right, Surya Prakash Mehtil, will you respond to what Neeraj is saying? He's raised that point 3 times, that this does not constitute office of profit. Mr. Neeraj will not decide what is office and profit and what is not. Court will decide. If you are not agreed, then go to the court and court will decide what is office and profit and not office and profit. And before that, Mr. Sanjay Jha said that everybody is the puppet now. So yes, everybody is puppet on the time of UPA 1 and UPA 2, because at the time of UPA 1 and UPA 2, 2004 to 2014, more than 300 raids was done ED and CBI, and they recover only 4,000 crore rupees. But now, at this moment, 2014 to 2022, more than 300 and 400 raids were done, and more than 1 lakh crore rupees recovered now. All right, so let Neeraj respond, and then I'll go to Sanjay Jha. We are running out of time. Neeraj, please respond to this. I would like to respond to my learned friend and ask him a question, that will he specify that how much money which has been attached by the ED or recovered by the ED so-called is of terrorist money, is of money laundering, for which this act of ED was made, it was strengthened in 2013. So, and 2016, when it became the black law, under which everything is now being scrutinized by the ED. Just ask him how much of this is the illegal money of drugs, of terrorism, and how much has been... No, but the question at the moment is whether or not the Jharkhand government can survive this this period of trouble. Sanjay Jha. Maha, I believe this matter will go to court, because the governor is obviously going to side with the BJP. You know how the governor of Maharashtra, these are constitutional positions, but they have now been so politicized that they virtually become vassals of the central government. Right. Mr. Mehtul, just let me finish. Mr. Mehtul, just let me finish. Mr. Mehtul, just let me finish. I believe this matter, Maha, will go to court, and you have not heard the last of it yet. The BJP is trying every ugly trick in the book
to destabilize another popularly elected government, because they are totally intolerant of an opposition. And in my opinion, they have a lot to worry about because their performance has been subpar. And I know that there is a popular goodwill building against everywhere intolerance is there, है ना, Sanjay sir? Sarji, what is the conviction rate of the ED? It is less than 1%, it's 0.5%. What is the recovery rate Please of do not ED? give lectures on the independence of institutions, sir. Can you please explain me what is the recovery rate of ED? 1 lakh crore, more than 1 lakh crore. And Excuse at the me. time of UPA, Excuse me. it is only 4,000 crores. Excuse me, what is the conviction rate? All Tell right. me what the conviction rate is. 0.5%. You will get the good conviction Okay, rate, sir. I'll have to interject over here because we've completely run out of time. We'll have to see in the next few days where this matter goes and what the governor finally, makes public, and when he makes it public rather, as to what the recommendation of the Election Commission is, whether or not it has recommended the disqualification of Hemant Soren. Many thanks to all our guests for joining us here on the show.